Teachers are finding that using different classroom technologies like tablet computers, digital video, iPods, and video games are great tools for helping students learn. While there are some naysayers who bring up some negative effects of technology on education, mainly budgetary reasons, using new technologies is the future of the education system. The following reasons should silence the naysayer and help heed the wisdom from Cheryl Nussbaum Beach, which says, "Teachers will not be replaced by technology, but teachers who don't use technology will be replaced by those who do." The first reason to use technology in the classroom is because students love it. Students love using new technologies. Whether it's the cool factor or just a genuine interest in new technology, it allows the teacher to vary the activities of the day and engage students. There's no commandment for education that says, "Thou shalt not have fun." Students spend hours using technology like computers and television when they get home from school. Why not engage them through their favorite mediums? Number 2, it engages the 4 key components to learning, which are active engagement, participation in groups, frequent interaction and feedback, and connection to real-world experts. The Amplivox Digital iPod Listening Center meets these 4 requirements also. Number 3, professional development. Using new technologies allows students to learn another skill set which will help them in the marketplace. How many jobs need basic computing skills, let alone advanced computing skills? Anytime a teacher can encourage a student to learn through technology, they kill 2 birds with 1 stone. The tech industry is only getting bigger. Encourage your students to know and understand technology so that they can be the tech leaders of the future. With the power of the internet, knowing how to use a simple piece of technology can turn an aspiring singer into Justin Bieber, whose mom uploaded YouTube videos of him singing, which ultimately led to his fame. Or it could turn a hilarious prankster into a YouTube star in Ed Bassmaster, who recently used an Amplivox Sound Cruiser PA system in one of his videos. Number 4, it makes life easier for teachers. Teachers have to juggle a variety of tasks outside of teaching, including planning lessons, grading, meeting with parents, and administrative work. Why not help yourself out and put tests online so students can instantly see their grades instead of spending valuable time grading? Number 5, it improves test scores. A benefit of engaging students through technology and media is allowing them to work at their own pace and not be held back by students who learn at a slower rate. This can allow gifted students to progress several grade levels ahead of their peers over the course of a year. Another proof of improved test scores comes from reaching different learning styles through the use of technology. The use of electronic drilling in education can help students learn quickly and provide incentives like games for them to keep progressing. Number 6, help students with low attention spans. Students with ADD or ADHD can be aided through the use of technology by mixing up the learning process with different methods and through providing them engaging activities to keep their interest. Technology is a favorite among teachers who teach in ESL classrooms or in special education settings. 7. Learn from the experts. With an increasing amount of free resources available on the internet, you can engage your students with content from the smartest and best teachers in the world. 8. Encourages homework. Wait a minute, there's something that actually encourages students to do homework? Yes. Some are finding that a flipped classroom approach, where homework is done at school and lectures are viewed online at home, is the best model because it allows teachers to give real-time homework help and lecture off the clock. This can help students overcome barriers quickly by removing frustration and negative feelings or emotions that develop in the learning process. Number 9, saves money. Although using new technology normally has an initial investment, it will save schools money by multiplying the number of teachers in a classroom. Instead of having one teacher teaching 20 students, adding technology like a school listening center or tablet computer will increase the number of functional teachers in your classroom and free up the real teacher to answer questions and help students. With the ability to use free online content, teachers will not need to spend as much money on curriculum resources. 10. Remove obstacles. Do you have students who have trouble hearing? Using a classroom amplifier system can allow teachers to amplify their voices and allow teachers to speak at a comfortable level. 100% of teachers in a recent study said that it was easier to get the attention of the whole class, and 100% of teachers said that they spent less time managing behavior and more time focusing on curriculum. This is just one of many examples of how technology can remove obstacles in the learning process. Amplivox Sound Systems manufactures and sells portable sound systems along with lecterns and podiums with built-in sound systems that are perfect for classrooms.
The Pinnacle Multimedia Lectern and iPod Portable PA System are great products for school settings that have a variety of uses, both indoor and out. For more information, please visit Amply.com or give us a call. Amplivox. Extend your voice. In this video, I'd like to give you 10 tips to make your presentations much better. My name is Matteo. I'm an entrepreneur and a bit of a presentation freak, and I've been studying presentations for a while. I put together a framework that I call Presentation Hero, and these 10 tips come exactly from there. Let's dive into it. My first tip for you is to know your audience. I'm not talking about knowing your audience by name or understanding your target audience. I'm talking about putting yourself in their shoes, trying to imagine how they would relate to your topic. It's really important for you to devote some time to this. And if you don't have time for anything else, devote all of it to knowing your audience. I'm imagining you as being professionals who have no time and the need to do a presentation tomorrow. And this is why I structure this presentation as the format you see. My second tip for you is to clearly state who you are. Now, it's very important that you're not a drone, you're not just a voice from the back of the room. You're a human being, and your audience has to understand this. Even better if they can also have a glimpse of what you do in life and what you are about, if they can describe your work or your passion in 2 or 3 words. The third tip I want to give you is to tell your audience why you're there. Tell them why you're passionate about the topic you're going to talk about. If you care and if you show them that you care, probably they will care as well. I hope I've done this in the introduction of this presentation. This leads me to my fourth tip, which is to tell your audience why they are there. To motivate them, you can do one thing. You can give them a glimpse of the advantage that they will get by following your presentation till the end. Another thing you can do is to explain the change that will happen in them if they follow through till the end. Now, I'm talking about change, but I didn't introduce this topic correctly to you. Let's go to the fifth point to analyze it much better. I suggest that you create a story around the transformation that you want to have in your audience. So first of all, there is a story involved, and stories are the way we relate to information and we deliver information to each other. So a story is not about fiction, it's about narrative, it's about the way you tell. And the transformation is something that needs to happen. So if your presentation doesn't elicit a transformation, doesn't give something new, a new insight, a new point of view, then maybe the presentation is not ready. Maybe you're not ready to deliver it. Maybe there is not enough material. Once you find that transformation, you can focus the story around it. You can focus the way that you will deliver the materials. And I'm not going to tell you how to do that. This is really up to you. But you have to know the end game. But you have to know another thing, and this leads me to tip number 6, that everyone in your audience will react differently. And that is totally fine. Your audience is also made of individuals who have their own individual lives and thoughts, and they have their own individual day, maybe not the best one. And it's okay for them to jump into your presentation at different moments. Maybe some jump in, while others jump out. Some people will be really interested from the first minute you start presenting, while others will actually be completely passive and look just for the tweetable content, or maybe the 1 or 2 phrases that will make them look smart. So don't worry about that. Don't try to please everyone. I've formatted this presentation as 10 tips, and not everybody likes lists, and I know that. My 7th and most important tip is to clearly mark the most important concept that you deliver.
Now, if you do this, what you are practicing is a story technique and a story point that is called the climax. Now, this sounds a harsh word and it's a Latin word, but to you it has to mean just the summit. The summit of the mountain, the peak that you reach after a long walk. Now, when you're at this peak, you have many advantages. First of all, your audience is geared towards understanding this peak, and they know that they have to give you their full attention. The other really important thing that happens is that since we are natural story listeners, we know that after the peak there is a downslope. We know that the climax marks the end, the beginning of the end of your presentation. So the other thing is that the climax is very empowering. You're really happy to be there and you have everyone's attention at this point. This is the moment where you have to start to leave the stage. It's not where you start talking more, but you start talking less. So how do you leave the stage? How do you ease out of a presentation? Well, this leads me to tip number 8. Provide a summary. Provide a summary that helps your audience connect the dots of all the different topics that you went through in your presentation. And in this way, you will not only help them understand better, but you will help them memorize the material better, because this is a perfect state of increased attention to memorize and to go back and see all the journey that you've done with them, all the elements of your presentation together make meaning, but also make a lasting memory. Now, tip number 9 says that you should provide actionable to-dos. If you can provide those to-dos, these are really precious. What you're doing is you're giving a gift to your audience. You're telling them and you're giving them something that they can apply to their everyday life from that moment on. And this is really precious. So if you have this ability, end your presentation by giving those tips. You're allowed maybe to have a call to action. You're allowed to have a word of hope or of wisdom, but make it short. This is a time where everybody expects you to leave the stage, so do it. I'm gonna leave shortly, but before I leave, I want to give you tip number 10. And tip number 10 is be comfortable with your material. Presentations shed a light on us, and if we are not prepared, it will show. If we are not confident with our material, it will show. So be courageous. In case somebody asks you a presentation and you're not ready, tell them. Spend more time studying your material. There is no presentation tip that will save you from not being knowledgeable enough on your topic. So these were my 10 tips, starting from knowing your audience, telling them who you are and why you're there, motivating them by telling them why they are there and why they should listen, going on to constructing a story around a transformation, understanding that the relationship with your audience will not be always ideal, that everyone will react differently, knowing that you have to mark your high point, and that from the moment that you mark your high point, you have to start to go downhill. And to go downhill, you can provide a summary and actionable to-dos. But the most important of all, you need to know your topic. So this was a glimpse into Presentation Hero. Presentation Hero is much more than these 10 tips. And I invite you to join me on a journey to discover how Presentation Hero can be useful to you. To do that, you just need to subscribe to a free mailing list. I promise to be on topic. So I will not talk about other stuff, just presentations. I promise not to be too many times in your inbox. So I want to send you an update maybe once every 2 or 3 weeks. And together with you, I'd like to explore this world a little bit more and also gather your feedback. So this is my invitation and this is my hope for you. And I wish that you enjoyed this video and hope to see you soon. Thank you for watching.
learn how to develop a good research topic. To start out, let's first answer the question why it's important to know how to develop a good research topic. Think of it this way. During your time as a student, and perhaps even later, you will probably write a good number of research papers. While some instructors might provide you with a list of research topics to choose from, others might not. You will have to choose your own topic. So, what can you write about? Well, let's first answer the question, what makes a topic really good? 3 things worth to mention here. First, it's a topic that strongly interests you. This is very important. Make sure that the topic you pick, the topic you will write about, is a topic that interests you, fascinates you, that you want to talk about. Really, there's nothing worse than spending a lot of time writing about a topic that bores you. Second, make sure your topic is creative. What do we mean by that? Well, there are some topics that have just been written about over and over and over again. Can you come up with a topic that perhaps hasn't been covered that much? Try to pick something that is creative and exciting to you and your peers. Writing about Shakespeare's dramas is great, but that topic in itself has been covered extensively. So try to find something that might be a little more creative than that. And third, speaking of Shakespeare's dramas, make sure you pick something that is not too broad. Look at your assignment prompt. How many pages are you supposed to write? If you get a 5-page paper as an assignment, well, Shakespeare's dramas is just going to be a little bit too broad. So make sure that the topic you choose fits the scope of your paper. Sometimes it can be really difficult to find a topic that is not too broad. Here are a couple of words of advice on what to do when your topic seems too broad. Let's say you are in an environmental science class. Your teacher gives you this assignment prompt. Write a research paper on a topic dealing with a current environmental issue. Your paper should not exceed 5 pages and should be based on a topic that strongly interests you. Well, you say, that's no problem. I know exactly what to write about. I saw the show the other day on TV, and it talked about the effects of deforestation on gorillas in Africa. I think that's a great topic. I know it interests me, and it's creative. So, let's write about it. Well, not so fast. Remember, your paper is only supposed to be 5 pages. How are you going to fit that topic into a 5-page paper? That's going to be difficult. So what could you do instead? The key is to add more context. For example, you could add some geographical context to your paper. Is there a geographic region or country in which gorillas are specifically affected by deforestation? Perhaps you want to focus more on a historical context. Is there a certain time aspect you want to write about? Perhaps the time when deforestation really started to affect gorillas. And third, with this topic, you could also add biological context. Perhaps there's a specific subspecies of the gorilla that you're interested to write about. So when we combine all 3 contexts and incorporate them into the original topic, this is what we get. Something like current effects of deforestation on the mountain gorilla in southwest Uganda. We thereby incorporate the historical context, the biological context, and the geographical context. Adding context truly is a great way of narrowing your topic. Hello, I'm Chris Burbank, Chief of Police for the Salt Lake City Police Department, and we're here today actually sitting outside our building on a beautiful sunny day. We want to talk about a serious subject though, and that's financial crimes. Detective Bridget Bennett, who has been with the department now for how long?
14 years. 14 years. And in financial crimes for? 6 years. So describe a little bit, what is a financial crime? What do you investigate in this unit? We investigate forgeries, frauds, that includes the credit card fraud, identity theft, counterfeiting, and embezzlements. How much of that is there going on? There is a lot, and there's been an increase. You know, it's interesting because this is something that doesn't hit the news. It is not, you know, in the paper every single day. But the dollar loss is staggering when you start looking at the number of cases that we have and how many people fall victim to fraud. It can be quite substantial. So let's talk a little bit. Give me some specifics about what I should be looking for as far as, am I being scammed, right? Is this legitimate, whatever I'm putting my money towards? Well, some of the most common scams that we do see at the Salt Lake City Police Department are related to phony employment offers. For example, reshipping scams, the people who hire on through Craigslist ads or KSL ads, in which they're offered opportunities to work from home by forwarding packages, or accounts receivable clerks, where they're told to make up checks and mail them off to people as their payroll checks. And they're instructed where to go and what to get, and then provided the account numbers to do that and process those. So Bridget, those signs along the roadway that say, call to make $2,000 a day or whatever it is, most of those are scams? I would be very reluctant. I've never investigated any of those personally, but I would be very reluctant to fall into one of those as employment. I would probably do some more research. If there's something that you want to do and work from home, I would suggest that maybe you find somebody who has a job that's like that and inquire where they work or find out how they got their position. Well, and often the common thread through all these, whether it's an employment scam or whether it's make money, you know, in some other way or invest in products, if it's too good to be true, it probably is. Isn't that correct? Yes, and in fact, some of the common ways that you would know that something would be a scam would be the way that the perpetrator commits the crime, and that is that they'll frequently offer you more than what you requested for an item that you have for sale, or they might ask you to send money through wire or by obtaining a Green Dot money card. Those are available at a lot of merchants, and then you load the money onto there. By giving them the reference number, they're able to get the money from that card without physically having to have the card in their presence. So who can be a victim of this? I mean, who do you see as a victim? Is there a category? I mean, is there some segment of society that I can sit back and say, it's not me, right? I don't need to worry about this. No, anyone can be a victim of a financial crime. Entities, businesses can be victims. People in general can be victims. The federal government can be a victim of a financial crime. We see a lot of counterfeit money and other items that are based upon federal banking accounts and so forth. Well, in fact, you brought a little show and tell today. Yes, I did. I brought a counterfeit $20 bill. When you're trying to determine that money is legitimate or if it's fake, a lot of times I recommend that you search for the bottom right-hand corner on anything that's a $10 denomination or greater and look to see if there's shifting ink in that number. Just move the money back and forth a little bit and you should be able to detect the change in color. Another thing that you can look for is that there should be a watermark. If you hold up the bill to the light, you should be able to see a watermark over here, and it should match the president that's on the front of the bill. And then also through all legitimate bills, you should find a security strip that runs through it, and it'll explain to you what the denomination is of that bill. This bill has none of those things. Now, these features are in most current money that is out there. However, there are older bills that are in circulation that do not have these features built into them yet. Why do you think this is on the rise? Because it's profitable, and the cases can be very hard to solve sometimes. Well, in fact, one of the most frustrating things, and those calls often go past you up to my office, are when people call and say, okay, I'm the victim of an identity theft, but it's occurring in Australia, or the person lives in Iowa. And whose responsibility is that? How do we bridge that gap in law enforcement? Is there an easy way to do it now? Well, for the most part, a lot of the outside agencies want you to report the fact that your identity was stolen to your local police agency.
So you would contact your local agency here, make that report, and then have that report forwarded to the appropriate agency. Some agencies will take reports directly from you, but most of the time we find that they want a local report made initially. Okay. So how can I reduce my risk of having my identity stolen? A couple of the very important things that you can do is safeguard your personal information. For example, we see that most of our victims of identity theft have generally been the victims of vehicle burglaries, where they have left a purse or a wallet or something inside their car, and then that item was stolen along with the credit cards and the IDs and so forth, or banking information, and then that information is then utilized in order to victimize the credit card, the bank, and open up other accounts using your identifying information. And then another huge source is through mail theft. What I usually recommend for people is that if you were going to mail a check out to someone in order to make a payment on an account, that you don't attach that to your mailbox and then leave for the day. A lot of times those are what are stolen, washed, and then utilized then for forgeries. If you were going to mail a check out, we recommend that you seal it in the envelope and take it to the post office and actually mail it from the postal facility. Okay. So one last question, and I think it's important. What can I do specifically to prevent not only this crime from occurring to me, but from a societal perspective? How can we reduce this crime from occurring? By limiting the amount of information you put out there. A lot of times we forget that things like Facebook and some of the sites that are used for genealogy and so forth have a lot of information on them that's available to almost anybody, and that all that information can be utilized in order to make you a victim of fraud. Well, and the internet is such a valuable tool, and I think we see more and more crime occurring utilizing the internet as a vehicle. And most of it does revolve around the fact that people put far too much information, personal information out there. And whether it's a financial crime or whether it's a more personal crime, I think it is a matter of too much information being shared. I would agree with you there. Bridget, thank you so much for joining me today. Thank you. If you would like more information about financial crimes, how to report these types of crimes, or any other information about the police department, please contact us on our webpage at slcpd.com. Thank you. With the 10-year anniversary of the September 11th terrorist attacks approaching, most people can still remember where they were when they heard the news. Why is that? Artist Scott Blake has tackled this difficult and controversial topic with his flipbook dissecting the attacks. Blake suggests that the media played a large part in making the attacks worse than they actually were, by playing the incident over and over again. This type of repetition creates a sense of panic and fear in the viewers. Dan Gilbert, professor of psychology at Harvard University, said it best. These are small-scale accidents, and we should be wondering whether they should get the kind of play, the kind of coverage that they do. Surely that causes people to overestimate the likelihood that they'll be hurt in these various ways, and gives power to the very people who want to frighten us. Scott Blake's flipbook consists of images, frame by frame, of United Airlines Flight 175 smashing into the South Tower of the World Trade Center. When you flip the pages quickly, you see the images as a motion graphic, similar to a cartoon. Accompanying the images are essays written by a wide range of people expressing their feelings about the September 11th attacks. More importantly, the authors of the essays were asked to reflect on and respond to the flipbook itself. While it may seem hypocritical to display the same images the media repeated over and over again, his objective is that people will reflect upon the attacks and begin to view it differently now that time has passed. Every flipbook is assembled by hand. Blake prints, binds, and cuts all his own work. In addition, each book is signed, dated, and registered on his Barcode Art website. A percentage of each book sold is donated to the Twin Towers Orphan Fund, Fire Department of New York, and International Red Cross. Free downloads of the flipbook are also available on his website. If you'd like more information about the 9/11 flipbook or other Barcode artwork,
contact Scott Blake at scott@barcodeart.com. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखो 10th क्लास केमिस्ट्री का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको आगे तक की इंफॉर्मेशन सिखाता है। 11th 12th क्लास में भी इस चैप्टर के बहुत सारे यूज आते हैं, इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बात करते हैं कार्बन की। कार्बन, आप जानते हो कार्बन आप हर फॉर्म में यूटिलाइज करते हो। आप अपनी लाइफ में जितनी भी चीजें काम में लेते हो उन सब में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। देखो सबसे पहला कंपाउंड ये क्या है? शुगर, है ना। शुगर, शुगर किससे मिलकर बनी होती है? शुगर बनी होती है कार्बन एटम से। अगर मैं शुगर का फॉर्मूला लिखूं वो होता है C6H12O6। जब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनती है? शुगर। मतलब शुगर कार्बन का एक कंपाउंड है। ये देखो ये क्या है? वुड। वुड, वुड में भी क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन। अगर कार्बन नहीं होगा तो वुड फॉर्म नहीं हो सकती है। वुड के अंदर भी कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। ये क्या है? पेट्रोल। हाँ पेट्रोल, पेट्रोल में भी क्या होता है? कार्बन। किसकी फॉर्म में? मीथेन, CH4 की फॉर्म में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन। यानी कार्बन नहीं होता तो पेट्रोल नहीं होता, पेट्रोल नहीं होता तो हमारी गाड़ियां कैसे चलती? नहीं चलती ना। यानी कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अरे इधर देखो ये क्या है? ये तो आपके कपड़े हैं। मतलब कपड़ों में भी क्या प्रेजेंट है? कपड़ों में भी कार्बन प्रेजेंट है। अगर कार्बन नहीं होता तो ये कपड़े नहीं होते। कपड़े नहीं होते ना तो आप ऐसे घूमते। इधर देखो ये घूम रहा है ना, हाँ आप भी ऐसे ही घूमते। ये क्या है? आदमी। बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन। मतलब कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह कार्बन प्रेजेंट है। शुगर में कार्बन है, वुड में कार्बन है, पेट्रोल में है, इवन हमारी बॉडी के अंदर भी कार्बन है। हमारी बॉडी बनी ही कार्बन से, हमारा खाना कार्बन से बना है। यानी कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारी डेली लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर चीज में कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनको हम अलग अलग फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं। इन्हीं सब कंपाउंड से हम डील करेंगे हमारे चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। तो सबसे पहले मिलते हैं कार्बन से और पता करते हैं कार्बन क्या होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। कार्बन, देखो कार्बन का सिंबल क्या होता है? C, ये आप अच्छी तरह जानते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एटॉमिक नंबर की। बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? वेरी गुड, कितना होता है? 6। दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा है। तो बताओ कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? कार्बन के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। और L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 4। 2 + 4 कितना हो गया? 6। यानी कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,4। ये आप अच्छी तरह जानते हो कि आउटर मोस्ट शेल को हम कौन सा शेल बोलते हैं? वैलेंस शेल। तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। आगे बात करते हैं अबाउट वैलेंसी ऑफ कार्बन, है ना। वैलेंसी ऑफ कार्बन ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हमने पढ़ा है ऑक्टेट रूल जो कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8। तो क्या कार्बन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं? नहीं। तो कार्बन क्या करेगा ना, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा? C4-, है ना। कार्बन को अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन दोगे तो उस पर -4 चार्ज आएगा, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। हर एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर 1 प्लस चार्ज आता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलने पर कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? 4+ चार्ज। तो अपनी वैलेंसी के लिए कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अब देखो इनमें ना कुछ प्रॉब्लम है। कार्बन एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है ना, बहुत छोटा होता है कार्बन का साइज। और उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन्स भरना चालू करो तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन क्या होता है? बहुत ज्यादा, क्योंकि साइज छोटा है। आप एक के बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा।
इस रिपल्शन की वजह से कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, मतलब ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, कार्बन एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दूसरा प्रोसेस देखते हैं, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, कार्बन का साइज बहुत छोटा है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर साइज छोटा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत कम। तो कार्बन का छोटा साइज होने की वजह से इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत कम। तो जब आप कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो देखो एक इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, तो अब जो बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे उनके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया तो अब इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फिर 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इन पर अट्रैक्शन फोर्स और ज्यादा हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते जा रहे हो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब आप कार्बन से चारों इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाओगे। आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, दूसरा निकालोगे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तीसरा निकालोगे अट्रैक्शन फोर्स और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना भी पॉसिबल नहीं है। अरे ये क्या बात हुई, ना हम कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ना हम कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो फिर कार्बन बॉन्ड कैसे बनाएगा? तो आपने एक बॉन्ड पढ़ा है, कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड? जो 2 एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, उसे हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो हमारा कार्बन है वो क्या करता है, कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी और एलिमेंट के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर कर लेता है। क्या करता है कार्बन? अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी और एलिमेंट के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर कर लेता है और 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4 कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से कार्बन ने देखो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ये कार्बन के वैलेंस शेल में 2 + 2 4, 4 + 2 6 एंड 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिए। तो इस तरह से कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, लूज नहीं करता, बल्कि वो तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और शेयर करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। सिंस कार्बन यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, इसलिए कितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? 4। कार्बन यहाँ 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। हम लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। क्यों? क्योंकि ये खुद के साथ, मतलब दूसरे कार्बन एटम के साथ या किसी और एलिमेंट के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। इसके अलावा देखो कार्बन की अगली प्रॉपर्टी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है, जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन और कैटिनेशन। देखो मैं आपको कंपाउंड का एक एग्जांपल दे रहा हूं। कार्बन का एक कंपाउंड है जिसे हम बोलते हैं C8H18। ठीक है, इसका नाम होता है ऑक्टेन। इसे हम इसी चैप्टर में आगे डील करेंगे। ये पेट्रोल जो बनता है ना आपका पेट्रोल, ये पेट्रोल का मेन कंपोनेंट होता है। पेट्रोल इसी से बनता है। इसके अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसमें क्या होता है, 8 कार्बन एटम्स एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए होते हैं, 5, 6, 7 एंड 8। और हर कार्बन के साथ क्या जुड़ी हुई होती है? हाइड्रोजन, लाइक दिस। इस तरह से हाइड्रोजन जुड़ते जाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, लाइक दिस। तो यहां पे हो क्या रहा है, देखो कार्बन, कितने सारे कार्बन एक साथ जुड़ रहे हैं, कितने सारे हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ रहे हैं। ये कार्बन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। दिस इज द आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कि कार्बन क्या करता है, दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर लंबी लंबी चेन्स बनाता है। जैसे एक चेन बन गई, ऐसा ना, बहुत लंबी लंबी चेन बनाता है। तो किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर बहुत लंबी लंबी चेन्स बनाता है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ कॉम्बिनेशन और कैटिनेशन। तो हम कैटिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं एज, जैसे कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू कंबाइन विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। देखो लॉन्ग चेन बन रही है ना, लॉन्ग चेन्स, एंड दिस एबिलिटी
ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटेनेशन। तो कार्बन अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर लंबी लंबी चेन्स बनाता है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। तो बात थी कैटेनेशन क्या होता है, बात करते हैं कैटेनेशन क्यों होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉज ऑफ कैटेनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलो कैटेनेशन शो कर रहा है, लेकिन वो कैटेनेशन क्यों शो कर रहा है। देखो मैंने आपको अभी बताया कार्बन साइज में बहुत छोटा होता है, जैसे ये कार्बन एटम है, ये दूसरा कार्बन एटम। तो जब कार्बन एटम ज्वाइन होंगे तो इनकी साइज क्या होती है, बहुत छोटी। इनकी साइज बहुत छोटी होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है दो कार्बन एटम्स के बीच में, उसको इस कार्बन का न्यूक्लियस और इस कार्बन का न्यूक्लियस दोनों ही बहुत टाइटली होल्ड करके रखते हैं। देखो इस पिक्चर को थोड़ा जूम करते हैं। सपोज ये कार्बन एटम है, ये उसका न्यूक्लियस, ये दूसरा कार्बन एटम है और ये उसका न्यूक्लियस। जब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो यहां बीच में मैं इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूं, ठीक है। मान लो ये आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और इस न्यूक्लियस को भी क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी इन इलेक्ट्रॉन्स ने इन दोनों न्यूक्लियस को बीच में बांधा हुआ है। छोटा साइज होने की वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम। यहां भी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम। तो सिंस कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है तो इसके न्यूक्लियस और बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों एटम्स को बहुत टाइट फोर्स के साथ होल्ड करके रखते हैं, बहुत टाइट फोर्स के साथ। इसकी वजह से जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा, एंड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना, सिंस ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो एक के बाद एक कार्बन जुड़ते चले जाते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू ये लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं। तो कार्बन में जो सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड होता है, ये जो सी बॉन्ड सी है इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से कार्बन क्या शो करता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। समझ में आता है आपको। तो हम इसको लिख सकते हैं कि क्यों कार्बन कैटेनेशन शो करता है। सो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, बहुत टाइटली होल्ड करके रखता है। as the nuclei of two carbon atoms hold the shared electrons very tightly। तो सिंस ये जो बॉन्ड बन रहा है वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए कार्बन एटम्स के बीच में बहुत सारे बॉन्ड्स बनते सकते हैं और इन सबकी स्ट्रेंथ क्या होती है, सेम। इसीलिए कार्बन कैटेनेशन शो करता है और कार्बन की कैटेनेशन शो करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा अगर कोई कैटेनेशन शो करता है तो वो कौन सा एलिमेंट है, कार्बन। कार्बन के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन। सिलिकॉन भी कुछ एक्सटेंट तक कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन सिंस सिलिकॉन का साइज कार्बन से बड़ा होता है तो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, कम। ये एक वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड वीक होता है, इसलिए इसकी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन से क्या होती है, कम। सिलिकॉन के अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर ये भी कुछ हद तक कैटेनेशन शो करते हैं। जैसे फॉस्फोरस का मैं एग्जांपल लूं, फॉस्फोरस एक इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4 की फॉर्म में, जहां पे वो ऐसे फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन ये कार्बन की तरह बहुत लंबी लंबी चेन्स नहीं बनाता है। क्यों, सेम रीजन, फॉस्फोरस का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू कार्बन, बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, कम। दिस इज अ वीक बॉन्ड एज कंपेयर टू दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा कैटेनेशन शो करने की प्रॉपर्टी किसकी होती है, कार्बन की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी ऑफ एलिमेंट कार्बन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट अकरेंस ऑफ कार्बन इन नेचर, कि आखिर नेचर में कार्बन कौन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो देखो नेचर में कार्बन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक फ्री स्टेट और दूसरी होती है कंबाइंड स्टेट। नेचर में कार्बन इन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। फ्री स्टेट, फ्री स्टेट का मतलब होता है यहां पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होता है,
कार्बन के अलावा कोई और दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। एग्जांपल्स जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन। दूसरा एग्जांपल डायमंड, यहां पर भी सिर्फ कौन प्रेजेंट होता है? कार्बन। तीसरा एक और एग्जांपल इंटरेस्टिंग, फुलरिन। इसको हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। आपने आज तक कभी फुलरिन का नाम नहीं सुना होगा, इसलिए हम अभी इसको यहां डिस्कस नहीं करें। ग्रेफाइट और डायमंड का नाम आपने सुना है, ये कार्बन की प्योर फॉर्म्स होती हैं। इनमें सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होता है और कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। दूसरी आती है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में क्या होता है? कार्बन इज प्रेजेंट और इट कंबाइंस with other elements to form compounds। यानी यहां पर ये कार्बन की फॉर्म में नहीं मिलता, कार्बन के डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलता है। और बहुत सारे हैं, बहुत सारे, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज C6H12O6, शुगर C12H22O11। ये किसका फॉर्मूला होता है? शुगर का। ये किसका फॉर्मूला होता है? ग्लूकोज का। पेट्रोल, पेट्रोल क्या होता है? C8H18। और भी बहुत सारे कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो कार्बन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता है और डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है। तो बेसिकली कार्बन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक फ्री स्टेट जो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बनी होती है? कार्बन से। दूसरी कंबाइंड स्टेट जिसमें कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है। तो हम लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इन फ्री स्टेट ऑफ कार्बन। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरिन आखिर होते क्या हैं, दिखते कैसे हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरिन हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले बात करते हैं एलोट्रोप्स क्या होते हैं। तो देखो, व्हाट आर एलोट्रोप्स? डिफरेंट फॉर्म्स of an element which have different physical appearance and properties। यानी अलग अलग फॉर्म एक एलिमेंट की जिनकी फिजिकल अपीयरेंस भी डिफरेंट होती है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मास हो गया, ठीक है, साइज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गए, वो सब डिफरेंट होते हैं, बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। तो एलोट्रोप्स क्या हो गए? एक ही एलिमेंट की अलग अलग फॉर्म जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होती है लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम। देखो, एलोट्रोप्स को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं ना। भगवान आपने देखे हैं, हमारे कितने सारे भगवान है ना, हमारे धर्म में हम कितने सारे भगवान मानते हैं। ये शंकर भगवान है, ये हनुमान जी हैं, ये कृष्ण भगवान है, और ये कौन है? ये श्री गणेश जी हैं। देखो, ये सब भगवान है, लेकिन क्या इन सब की अपीयरेंस सेम है? देखो, शंकर भगवान ऐसे दिखते हैं, हनुमान जी थोड़े ऐसे दिखते हैं, कृष्ण भगवान थोड़े काले हैं, गणेश जी के सिर पे हाथी का सिर लगा हुआ है। इन सबकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है? डिफरेंट। इन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है? डिफरेंट, है ना। लेकिन अगर हम बात करें, ये सबके सब हम इन सबकी पूजा करते हैं, इन सबकी पावर्स क्या है? सेम। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये जो अलग अलग आप चार पिक्चर्स देख रहे हो, ये चारों एक ही भगवान के अलग अलग फॉर्म्स हैं जिनकी फिजिकल अपीयरेंस तो डिफरेंट है लेकिन इनकी बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स, बाकी प्रॉपर्टीज क्या है? सेम। तो ये चारों भी क्या हो गए? भगवान के एलोट्रोप्स। तो एलोट्रोप्स क्या हो गए? एक ही चीज के ना, एक ही चीज के अलग अलग फॉर्म्स जिनकी फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो? डिफरेंट, लेकिन सबकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो? सेम। उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स। तो एलोट्रोप्स are different forms of an element which have different physical appearance and properties but their chemical properties are same। Since हम बात कर रहे हैं about कार्बन, तो कार्बन के तीन मेन एलोट्रोप्स होते हैं which are diamond, graphite and fullerene। देखो, ये तीन मेन एलोट्रोप हैं कार्बन के जिनको हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद डायमंड। तो देखो, डायमंड की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आप अच्छी तरह से जानते हो, दैट इज इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन।
अर्थ पे जितने भी सब्सटेंस नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं उनमें सबसे हार्ड कौन है? डायमंड। देखो डायमंड इतना स्ट्रांग क्यों होता है वो हम इसकी स्ट्रक्चर को देखकर बता सकते हैं। तो आओ डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड डिस्कस करने से पहले जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको अच्छी तरह बताया, कार्बन। कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर, है ना। इसका मतलब ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 4 कोवेलेंट बॉन्ड। जानते हो आप इस चीज को? तो डायमंड में क्या होता है ना, डायमंड में डिफरेंट कार्बन एटम्स, जैसे एक कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अपने आप को अरेंज करता है। तो ये एक टेट्राहेड्रल कार्बन है जो 4 अलग अलग कार्बन से 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। फिर से ये जो दूसरा कार्बन है ये भी क्या करेगा? 4 अलग अलग कार्बन एटम से अटैच्ड होगा। सिमिलरली ये कार्बन भी 4 अलग अलग कार्बन से, ये कार्बन भी 4 अलग अलग कार्बन से टेट्राहेड्रल मैनर के अंदर अरेंज होगा। फिर से जो नए कार्बन आपको दिख रहे हैं ये भी क्या करेंगे? 4 बॉन्ड बनाएंगे और अपने आप को टेट्राहेड्रली अरेंज करेंगे। ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा। हर कार्बन यहाँ पे और अलग कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता जाएगा जिनका नंबर कितना होगा? 4। तो जैसा कि आप देख रहे हो नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड्स बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से क्या होता है, हर कार्बन 4 अलग अलग कार्बन के साथ और वो कार्बन फिर 4 अलग कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स का एक बहुत बड़ा 3 डायमेंशनल नेटवर्क जनरेट होता है। 3D नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है और ऐसे बहुत सारे स्ट्रांग बॉन्ड्स का एक क्या बन गया है? बहुत बड़ा 3 डायमेंशनल नेटवर्क। तो इस 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनने की वजह से आपको जो डायमंड होता है इट इज वेरी हार्ड एंड ब्रिटल ऑल्सो। ठीक है, इस बहुत बड़े कोवेलेंट बॉन्ड के नेटवर्क की वजह से डायमंड क्या होता है? वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। इसी वजह से हम कहते हैं कि डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन ऑन द अर्थ सरफेस। तो थोड़ा और अच्छी तरह से इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो देखो जैसा मैंने आपको बताया, हर कार्बन टेट्राहेड्रल मैनर में 4 कार्बन से अटैच्ड है। वो कार्बन फिर किसी दूसरे कार्बन से, कोई दूसरे और 4 कार्बन से टेट्राहेड्रल फैशन में अरेंज्ड है। हर कार्बन इस तरह से 4 कार्बन से अटैच्ड हो जाता है और इस तरह से एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनता है ऑफ कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स, जो कि क्या होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये तो फिर भी एक बहुत छोटा नेटवर्क है, ये नेटवर्क और ग्रो करता जाता है। तो मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूं जिससे आपको आइडिया क्लियर होगा कि आखिर ये नेटवर्क बनने के बाद कैसा दिखता होगा। देखो ये भी डायमंड की स्ट्रक्चर है। तो कितने सारे कार्बन बॉन्ड्स, आप ना गिन भी नहीं सकते, इतने सारे कार्बन बॉन्ड बन गए। तो सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, इतने सारे बॉन्ड्स बन गए, इसलिए डायमंड क्या होता है? इट इज वेरी हार्ड एंड इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। देखो मैं बार बार एक टर्म यूज कर रहा हूं, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। नेचुरल सब्सटेंस इसलिए कि कुछ मेन मेड सब्सटेंस भी हैं जो डायमंड से भी क्या होते हैं? ज्यादा हार्ड। उसका एक एग्जाम्पल है टंगस्टन कार्बाइड। ठीक है, आपको सब याद नहीं रखना है, तो मैं आपकी जीके के लिए बता रहा हूं, जनरल नॉलेज के लिए। डायमंड से भी ज्यादा हार्ड कौन होता है? टंगस्टन कार्बाइड। इसीलिए बार बार मैं नेचुरल सब्सटेंस बोल रहा हूं। तो चलो, ये हुई बात डायमंड की स्ट्रक्चर की। डायमंड के स्ट्रक्चर में हमने ये सीखा कि कार्बन एटम 4 अलग अलग कार्बन से बॉन्डेड है। इसका मतलब यहां पर कार्बन की वैलेंसी क्या है? कंप्लीट। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज कंप्लीट, मतलब इसके चारों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में काम में आ गए। समझ में आता है आपको? तो इस फैक्ट को मैं आगे यूज करूंगा, इसलिए मैं इसे यही डिफाइन कर रहा हूं कि डायमंड के अंदर कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स काम में आ जाते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। सो द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड इज that due to presence of a large 3-dimensional network of covalent bonds, that is carbon covalent bonds, diamond is very hard and have high melting point, जो कितना होता है? अराउंड 4827 डिग्री सेल्सियस। इन कार्बन बॉन्ड्स के इतने बड़े नेटवर्क की वजह से ही
डायमंड क्या होता है, बहुत टफ हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और उसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा। देखो कितना ज्यादा है, 4827 डिग्री सेल्सियस के आसपास। सेकंड जो प्रॉपर्टी डायमंड की, दैट इज इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, मैंने आपको अभी बताया था। देखो कार्बन डायमंड के अंदर क्या होता है, 4 दूसरे कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होता है। कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन कहां पे काम में आ गए, शेयरिंग में। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। आप मुझे बताओ, क्या डायमंड में कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन बचे? ये कार्बन भी फर्दर 4 बॉन्ड बनाएंगे, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा। मतलब कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर रहा है, तो उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। इसलिए डायमंड क्या होता है, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में काम में आ गए, देयरफॉर देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। सो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी डायमंड की, उसे भी अच्छी तरह जानते हो, दैट इज इट शाइन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब भी आप डायमंड पे लाइट गिराते हो तो वो क्या करता है, शाइन करता है। देखो इसका रीजन क्या है, देखो जैसे ही लाइट डायमंड पे आके गिरती है, ये इस फेस के थ्रू यहां एंटर करेगी। एंटर करते ही ये लाइट क्या होगी, इन फेसेस पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगी। इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर ये इस डायमंड के अंदर क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। कि देखो फेसेस के एंगल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। तो जैसे ही कोई लाइट रे डायमंड पे एंटर करती है, इस पे इंसिडेंट होती है और इसके फेसेस के अंदर जाकर वो क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। तो इसी वजह से लाइट के प्रेजेंस में या जब भी डायमंड के ऊपर लाइट गिरती है तो वो क्या करता है, शाइन करता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं दैट एज लाइट रे फॉल्स ऑन डायमंड इट गेट्स ट्रैप्ड इन इट्स इंटीरियर फेसेस। उसकी वजह से डायमंड क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में शाइन करता है। और इसी वजह से ये ट्रांसपेरेंट भी होता है ना। जनरली डायमंड कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो भी लाइट गिरती है वो इसी के अंदर ट्रैप हो जाती है। और दूसरा, डायमंड्स कैसे होते हैं, जनरली कलरलेस। तो डायमंड इज ट्रांसपेरेंट, कलरलेस एंड आर have a brilliant shine in presence of light due to their specific structure.